So, how a bad day looks like in my life? Actually, a bad day doesn't mean कि you are sick, you are ill, or you have any weakness. It simply means कि you are tired of doing the same things again and again. So, let me tell you. Today I woke up at 6 a.m. and I slept at 1 a.m. So I don't know why. Like जल्दी नींद खुल गई. So from 6 to 7 I was just checking my YT studio, checking some messages from some everyone. Okay. सो ऐसे करते 7 हो गया, देन 7 से 9 मैंने खेला, थोड़ा बाहर गया था खेलने के लिए। देन आई केम टू 9, नहा धो के फिर फटाक से मंदिर गया। बस ऐसे ही मन कर रहा था आज, सो मंदिर चला गया एंड लिटरली टुडे आई फेल्ट सो पीसफुल, लाइक इट वाज नेवर बिफोर द सेम। मैं इससे पहले बहुत बार मंदिर जा चुका हूँ, बट इतना पीस आज ऐसा पहले कभी महसूस नहीं हुआ। देन मैं 1 घंटा था, बैठा था आराम से एंड वेट लेट मी टेल यू, द मोमेंट व्हेन आई सॉ द गॉड द आई स्टार्टेड प्रेइंग, लिटरली इट वाज unexpectedly I started crying. My tears were started coming out from my eyes, and I even don't know, but I know the reason actually. So this was the scene, and literally I felt so good. Then after one hour I came back, then I had my breakfast. Then उसके बाद मैं अभी now it is 11:30, then I started creating some content, like just singing because literally singing nowadays, singing gives me so peace. Like it is a very good medicine for me currently. Okay. एंड अभी हो रहे हैं 11:30, ठीक है। सो आई एम जस्ट थिंकिंग कि अभी मैं क्या करूँगा। अभी मेरे पास पूरा दिन है एंड आई विल बी जस्ट टेक माई फ़ोन, सीइंग मैसेजेस, लाइक मैसेजेस नहीं, सॉरी, आई विल बी जस्ट चेकिंग माई फ़ोन। या तो मैं कोई एनीमे देखूँगा, लाइक एनीमे मतलब एनीमे देखूँगा, या तो मैं खाऊँगा, सोऊंगा। दिस इज़ द थिंग आई विल डू माई एंटायर डे। यही होगा मेरा रूटीन। And when I see my mother, she's a housewife, and literally pura din she will be working in the kitchen, in the house chores, like everything. And after seeing her, I feel so bad, so guilt, and I don't know like what to do because मेरा counseling चालू है, and even I thought कि I should join like this labor वाला thing for 1 month because मेरे पास 1 month का gap है, but parents मना कर रहे हैं, and literally my parents are so good, they never expected anything from me, they always trusted me, always supported me, and in return what did I give? It was something they expected a little higher, but I have not given that. Just they want me to score good in academics, they just want me to study, that's all. They never asked me to do something in the homework or anything. Like even they take water by themselves कि I should not disturb my child. He is a student, he will study. And literally after realizing this thing, it broke my heart actually from my side. And literally after hearing this, after realizing this, I felt कि a dead son is better than a failed son. And now I'm able to understand the real meaning of this beautiful quote, which is applicable to many students like maybe me. And yeah, and like okay, it is fine, but then to after being I will be 19 or 20, and at this age I feel ashamed to ask money for from my parents. And but then too, without asking, they give me for my basic needs, and that is so tearful wala scene. Okay, everything, I don't know why I'm sharing this to you all, but I'm just telling ki jo bhi students like 11th mein, 10th mein, and those have got good parents, please don't ruin their expectations. They just expect one thing, that you should succeed in your life, just this much and nothing else. And even after just one wish, if I'm not able to fulfill their needs, then what's the use of being so much of like, what's the need? I don't think there is any need to live like this. And I don't know why. And sometimes bad days come, they go also, but the moment bad days come, it is not that much easy to handle these days. And
we know very well what we are, what we have done in our past. Like literally, I have misused my privileged, I have misused my parents' trust, I have broken their trust. Like they always, like, I don't have words to express. So this was the thing, and I don't have any script, sorry for that. बस इतना ही कहना चाहता था. Wait, let me tell you something which I have learned in my life. Like कि no one stands with you until and unless you don't, like, मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट. इट इज़ समथिंग, मैंने कुरुक्षेत्र का एक एपिसोड देखा था. सो उसमें कृष्ण भगवान ने कहा था अर्जुन से कि अर्जुन ने कहा था कि मेरे सामने तो सब मेरे अपने ही हैं, फिर मैं इन पे वार कैसे कर सकता हूँ. सो कृष्ण जी का रिप्लाई सुनिए. उन्होंने कहा कि जब ये सब अपने ही हैं तो हमारे सामने क्यों हैं. लिटरली क्या मीनिंग है यार इस बात का. एंड बहुत प्यारा था. एंड एक और मैंने सुना था कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनका पढ़ने का मन नहीं करता, या यू कैन से कि बहुत लाइक कुछ करने का मन नहीं करता. ओके, मैंने सबसे पार कर चुका हूँ, सो बिलीव मी. सो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम 16-17 साल की एज में तुम जेई जैसे एग्ज़ाम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे हो, फाइट कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो. इससे ये भी तो एक टाइप का विक्ट्री है, एक टाइप का सक्सेस है. बहुत सारे लोग इसमें भी नाकामयाब हो जाते हैं. एंड लिटरली तुमने अभी तक हार नहीं मानी है, ये भी बहुत बड़ी सक्सेस है. सो बस यही कहना था. थैंक यू एंड सॉरी फॉर वेस्टिंग योर टाइम.